दोस्तों देश में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसके कंस्ट्रक्शन के पहले जो है कोई स्टेप अगर पहले किया जाता है दैट सर्विंग उस ग्राउंड पे जाके देखना कि एग्जैक्टली क्या है उसका मैपिंग वगैरह करना। और आज हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं मिस्टर अनिरुद्ध शिदोरे जी, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जहाँ पे अभी ही इज द फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो सर्विंग की फील्ड में है, जहाँ पर जियो टेक्निकल सर्विस टोपोग्राफिक सर्विस करते हैं। बैंड्रा-वर्ली सी लिंक, पूरा नवी मुंबई का शहर, नवी मुंबई का एयरपोर्ट, कोंकण रेलवे, देश विदेश में ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए सर्विस अनिरुद्ध सर ने और उनकी फैमिली ने जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं। And today he's going to share a lot of things with us. In this conversation, we will learn about the challenges he and his company has faced. We will learn about new things जो आ रही है अब इंडस्ट्री में, ड्रोन्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स दैट यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। अनिरुद्ध सर जो है ही इज वेरी वेल एजुकेटेड इनटू द कोर, आई वुड से। सर ने जो है वो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग भी की है एंड हिज एमबीए इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। उन्होंने जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी स्टडी की है एंड ऑल दिस एक्सपीरियंस कंबाइंड विद हिज फैमिलीज एंटायर एक्सपीरियंस दैट हैज कम अप। उन्होंने पूरे देश विदेश में काम किया है, अलग अलग सर्विस किए हैं। आज सर से इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, बातें करेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। So it's going to be a very technical and interesting conversation. So surely watch the entire video. सर के बारे में जो भी लिंक्स होंगे फॉलो करने के लिए उनकी कंपनी के वेबसाइट के बारे में, you would find those in the description. और बाकी अब शुरू करते हैं तो surely पूरा वीडियो देखना। तो अनिरुद्ध सर वेलकम। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछना है वो एकदम बेसिक लेवल का है। मोस्टली जब हम प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं ना, मोस्टली पीपल आर लाइक कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या फीचर्स होंगे। बट स्टार्ट तो होता है सर्वेइंग से, उस जमीन पे जाके देखना, चीजें स्टडी करने से। कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंसेस ये जो सर्विंग है, जियो टेक्निकल हो या टोपोग्राफिक हो, ये क्या होता है? सो देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, इट हैज़ टू टाई विथ व्हाट इज एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू डू अ सर्वे। सो व्हाट डू वी मीन बाय सर्वे? वी इन एसेंस वी जस्ट क्रिएट मैप्स। That maps can have they need to represent what is on the ground, कहाँ पे कुछ existing road है, if there's any trees, if there's any existing infrastructure, if there is an undulating terrain, so levels, contours. So ये सब when we do a survey, when we collect all these details and we put them on the map. So map is like a 2D representation of our physical world. So this is the starting point for any infrastructure design, development. आपको कुछ भी करना है, you need that map. So in essence, surveying is just preparing maps to represent the physical world. सो जब ये मैप्स वगैरह बन जाते हैं उनके बेसिस पे बेसिकली फिर Correct, वो आर्किटेक्चरल डिजाइन हो या प्लानिंग हो प्रोजेक्ट का वो correct, होता है। correct. सो विदाउट योर वर्क Absolutely, इट्स इम्पॉसिबल टू डू द रेस्ट। absolutely. लेकिन सर इसके आगे जो सवाल मुझे पूछना है दैट वुड बी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कभी कभी न्यूज में मिलता है सुनने कि गवर्नमेंट XYZ जगह पे सर्वे करा रही है फॉर मे बी XYZ प्रोजेक्ट, Correct, लेकिन वो क्या करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही है, वो नहीं समझते। correct, एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट बिग प्रोजेक्ट्स। correct, और नवी मुंबई इज वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स जो आपके फैमिली ने और आपके फर्म ने जो एग्जीक्यूट किए हैं, correct, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल correct, लैंड सिटीज आई वुड से इन द वर्ल्ड। correct. I want you to share the journey of these surveys and how it came to be. So Navi Mumbai actually started in the 60s. So government envisioned that Mumbai is probably not going to be, sustainable. It's growing at a very fast pace. So what they thought was Navi Mumbai, just right across the Thane Creek, is the perfect location for Mumbai to expand. So what they did was they notified the entire land and they acquired it. And when you do the acquisition, it's like a blank slate. You will have existing field burns, you will have existing kacha roads, pakka roads, you will have some kind of gautans, you will have some villages, वगैरह. So once you have that notified land already with the government,
Now the next step is do the planning of it. कहाँ पे roads कैसे आने चाहिए, where you need to connect with the existing infrastructure. So for that you need the survey part of it. So what we did was we did the survey of course not entirely in one stretch. It was done it in stages, but thoda you do the survey, you create maps, you take spot levels, you create contours, so you get the representation of the topography. So once you have that, that gives like an input to the planners and engineers to devise and plan and do the infrastructure planning for all the roads, railways, where you want to have different nodes. So they have a nodal structure. So Airoli node, Ghansoli node, Koparkhere node. So that is the planning aspect of it. So the survey provides an input for doing all the next steps. So we, as a company, I think the first survey and demarcation of the node was done, I think, in New Panvel. So I think in 1975. My grandfather, actually, technically speaking, it was even before our company was actually established like a partnership. So my company, our company was established as a partnership in 1978 by my grandfather. So the original partners were my great grandfather and my father, my grandfather. My father joined in 1980. I joined in 2009-10. So it was a long journey, but so it takes decades to develop something like Navi Mumbai, and you need quality surveyors, quality geotechnical engineers to give inputs to the planners and engineers. सो सर एक बात मुझे यहाँ पे ये समझ में आई कि एज यू सेड इन लाइक 1978 में शुरुआत हुई थी Yes. एंड एट दैट टाइम नवी मुंबई वुड हैव बीन लाइक जस्ट बंजर Yes, जमीन, totally. farms, few gauthans. Yes. So how like I wanted to know the technical details कि किया कैसे जाता था, क्योंकि बहुत बड़ा साइट है, इवन इफ यू कंसीडर जस्ट वन नोड Right. तो भी वो काफी बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है, Right. उसके अंदर में भी Right. मल्टीपल क्या था, हंड्रेड्स में शायद दूसरे छोटे प्रोजेक्ट्स बैठ जाए. Correct. सो हाउ वाज द प्रोसेस, मतलब मैं डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि अर्ली 70s में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे किया जाता था, नाउ हाउ द प्रोसेस हैज चेंज्ड. So survey itself has not changed. The techniques and probably the instrumentation has changed. So survey principle is it's simple. It's whole to part. So you have an entire area. You have to divide it into separate parts. You do the surveys of little chunks, and then you merge them to create an entire survey of the entire land. So it's the principle is the same. So when we started in the 70s, we only had theodolites and plain table. एक्सप्लेन कर सकोगे आप So, जनरल लोगों के लिए yeah, क्या so होता है ये? so people might have even seen it. So अभी बहुत कम use करते, but some land records people do use it. Plain table is what it says. It's a plain table. So you put a drawing sheet on the table itself. You have something called an alidade where you put it on the map. There are sighting lines where you sight and you take details directly on the paper itself. It's a little more complicated than that, but it's an involved process. So you create maps directly on the site itself. On the plain table, you put a drawing sheet and you create maps. But that gives you just the distances and measurements and everything. For levels, you need, at that time, it was dumpy level. So you take level, you have a staff, you take, backset from a known point, you take readings on the staff, you compute the level of that particular point, and then you map it on the drawing sheet, and then you hand draw all the contours. It's interpolation. You have to create a grid of all the levels, and then you just interpolate contours. So it was a very much manual process. It used to take a lot of time. So that was when we were doing initially. Yes. Then over a period of time, you have theodolites where you can take the angles and distances much more accurately than the plain table. Then after a while, you also have EDMs, electronic distometers. So you put them on the theodolites to get the distance. Then you don't need the chain or tape to get the measurements done. Then you have a total station which came in the 90s. We got our actually, in fact, we were one of the very first few companies where we got robotic total stations in the late 1980s 90s, where you have laser measurements as well,
and then only one person can do the measurements. You can just take the controller and then just move around, and the total system tracks you. Okay. So we got that in the late 1990s. Then you have GPS instruments. That opened up a lot of technology, ease of doing surveys using the GPS. After that, then you have drone technology, you have lidar technology. So the technology has changed. It has become much more easy to do the surveys, but the principles are the same. Surveying, okay, whole to part, you need control point establishment. So all these things have stayed the same. How you do it has changed a little bit. Yes. So you mentioned about lidars and drones. Yes, आजकल उसके बारे में बहुत सुनते हैं. correct. So can you just give it a bit कि आप कैसे यूज करते हो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह आपके काम में? Yes. So every new technology, when it comes along, uh, what we have experienced since we've been working for the last 40-50 years, it has to be used to serve survey and not itself. I'll give you an example. So when drone technology came along, drone technology is not that recent. It's actually pretty old, and that works on the principle of photogrammetry. Initially, we used to take photos from the planes, aeroplanes, and satellites, and we used to do photogrammetry, and we used to do it. But it was a little long-winded. Software were not that powerful. Computers were not that powerful. So अभी क्या हो गया है ना? In the last 5-10 years, drone have become so ubiquitous. They become so cheap. There's so many startups who come along, and they think that they can just buy a drone, लाख 1.5 लाख का ड्रोन ले लेंगे, सॉफ्टवेयर वी कैन रेंट इट आउट, एंड जो भी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जो जीपीएस एक्चुअल जो सर्वे का कंपोनेंट है, दैट दे आउटसोर्स टू सम सर्वेयर्स फॉर अ वेरी मिनिस्क्यूल फी. They do the survey and they create some very fancy snazzy outputs and give it to the clients. Okay. And client is like, are so impressed, are it looks so nice and things like that. But what happens is, all these new startups, they have almost no survey background. I won't say there are a few startups who are pretty good, but majority of them are pretty crap. So what happens is, it's a double-edged sword with the new technologies. It's easy, it's very accessible, but at the end of it, if it is not surveying the survey industry, or it is not giving you the right outputs, it is of no use. So many times what has happened is, we compete with these startups. They have very little overheads, they have little experience, they have very little in the game, very little skin in the game. So they do at a very undercoat. क्लाइंट भी बोलता है, अरे यार तुम लोग 100 रुपये बोल रहे हो, 10 रुपये में कर रहा है, हाउ कैन आई गिव इट टू यू. तो हम लोग उसको दे देते. तो दे गिव इट टू हिम and he does some job. It's a crap job. So the client, because they know us for the last 40-50 years, they come back to us and they tell us ki, "Arey sir, can you rectify this? Can you do this?" So we tell them ki, you should not see. Ultimately, you're out. You want survey to be done, and not drone survey. There's a difference. We always tell our clients, if you want survey to be done, you get a surveyor who knows what is surveying. And if a surveyor asks you, okay, the first question always we do is, whenever a client comes to us, sir, हमको ये survey करना है, the first question that we ask, our company asks, is, what is the purpose of the survey? Because that will give you the answer of what needs to be done. Not every survey is the same. Every survey for every project is different. तो ये सब चीज़ें हैं. तो the technology part of it, you have to be very careful. Even if it is easy, it's very easy to get carried away with it. So basically टूल आ गया, बट आउटपुट जो आ रहा है उसका एंड में, वो तो फाउंडेशनली सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स में ही है बेस्ड. Correct. सो समवन जिसको सिर्फ वो टेक यूज करने आ रहा है, नॉट नेसेसरीली कि वो Precisely. एग्जैक्टली वो रिजल्ट भी ले आ पाए. Precisely. सो इट हैज ओपन एवेन्यूज. बट इफ यू गो बैक इन टाइम थोड़ा, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम लाइक ह्यूमन सेटलमेंट, या कोई भी रिसोर्सेज के से दूर होते हैं. Yes. जनरली जितना मैंने स्टडी किया है ड्रोन सर्विस के बारे में,
सो मेनली मुझे ये मिला है कि इट्स बिगेस्ट बेनिफिट इसके जहाँ पे इंसान को जाने डिफिकल्ट होगा वहां पे वो कर लेता है वगैरह। एंड यू एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ कंपनी के आर जैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, के आर बेसिकली ऑडियंस मतलब कोंकण कोंकण रेलवे रेलवे, करेक्ट। देश की आई थिंक इवन टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स एवर कंस्ट्रक्टेड थे। यस, उसकी सर्विंग आपने की थी एक काफी बड़े सेक्शन में। राइट सो राइट, उस जमाने में तो थे नहीं ड्रोन्स वगैरह, सो करेक्ट। हाउ वुड हैव बीन लाइक कैसे किया होगा वो, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी उसमें? So, Konkan Railway, I will give you a little bit of background. So, my grandfather and my father, at that time they were operating the company. So, Konkan Railway from I think 1990 to 92, 93 is the phase when we actually. So, we surveyed about 300-400 kilometers of Konkan Railway through all these tough terrains. And geotech investigation also we have done for from I think from Roha to Ratnagiri. The terrain is very, very, harsh. It's very inhospitable. You can't go. Everything jungle clearing, cutting करके ही आपको जाना पड़ता है. So, how do we do the survey in such terrains? I'll give you since we are already in Konkan Railway, but I'll give you a different example of we had done a survey in Assam in 7980, even before that, 10, 12 years before that. In Assam, there was a project for transmission line tower. So at that time, there was nothing there. In 7980, obviously you don't have mobiles. Even walkie-talkies were not that prevalent at that time. So what we used to do was, this is what I've heard from my father and my grandfather. So let's assume, so transmission line towers are always in remote areas, like high tension transmission line towers. So let's say you have a tower location on one particular peak, and you see that the second tower is on the next peak. Obviously, you'll have some intermediate peaks, but the line is going in this particular direction. So, surveying, you have a principle of tachymetry also. So you can't measure distances if you have like thick terrain. You can't measure it. So tachymetry means you have three lines. You have to find the angle and you get the distances between that. So for that, you need to put a staff on the second location. So what we used to do was, we used to put theodolite on one particular peak and tell the laborer or the helper or the junior surveyor, you have to go there. So he looks through that theodolite and he visualizes that and he climbs down the valley and he comes up. Okay. And the only form of communication is hand signals. So if he doesn't reach that location, he has to trek back to the original location and see, Array, no, I didn't go to that right location. So you go there. Okay. Then he goes there. So imagine the level of difficulty you have to encounter to do the surveying at such extreme locations. So similar thing has happened in Konkan Railway also. So there is no alternative. So if you say ki, I have done a survey in that location, this is what people used to do. And then you have to walkie-talkies and things like that. But again, it is a difficult terrain. Abhi kya hota hai? You have a DGPS, or you just go there, you put your DGPS, you get accurate coordinates, X, Y, Z. Fairly accurate. सो एक टाइम था जहाँ पे लाइक एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग एंड even I would say dangerous at points Yes, very process dangerous. होता था, Very dangerous. especially in KR Konkan Railway was pretty jungle. challenging. Pura jungle. So even geotechnical engineering, geotechnical investigation, when we had done for Konkan Railway, there's innumerable rivers and streams which cross the Konkan Railway. If you go, every location we have to do there's going to be some kind of bridge. So you need the geotech investigation. What is the strata underneath? So for that we used to put a floating platform. We put two boats together. We create a platform on top of it, and then you put a drilling rig on it, and then you do the investigation of it. So each and every aspect of civil surveying and geotech investigation is a very involved process, and it's so essential that this is step number one. If you do not get this right, if you screw this up, all your designs, all your construction is going to be crap. It's all going to be to naught. Yes, it's like as we said in the beginning, foundation ही है Yeah, वो. पूरा. But sir, as we
एज यू सेड ओवर हियर टेरेन डिफिकल्टी, वेदर्स हो गए या ये चीजें तो आ गई, बट समटाइम्स डिफिकल्टीज आर अ बिट डिफरेंट, देयर आर ह्यूमन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्वड. Yes, सो आपने शेयर किया था सर इन जम्मू एंड कश्मीर yes, यू हैड एग्जीक्यूटेड अ प्रोजेक्ट एज अ yes. कंपनी, और उस समय पे कुछ और स्पेशल टाइप की डिफिकल्टीज आपने फेस की Yes, थी. कैन यू yes. शेयर दो स्टोरीज? So, certain projects you have, as you said, other than terrain difficulty, weather difficulty. So this project we did in Jammu Kashmir, Mughal Road project. So it was called Mughal Road because the road was existing since the Mughal times. So that terrain, yes, the terrain was difficult, but more challenging than that was the difficulty with the terrorists and infiltrators. So we did that project survey of that project under military protection. So we had to. There was a military convoy with us, with our surveyors, and they used to tell us, "Ki you do this in this time only. We have some operation going on." Okay. So we had to suit our timing and schedule based on what they used to tell us, because obviously they were protecting us. I think this was in 2007 or so. We did the survey, and at that time, what it was not that easy. Peaceful. इतना peaceful नहीं था अभी भी, but at that time it was a little more dangerous. Yeah. So surveyors are like the first people on the ground, and we have to face all these challenges. Come rain, shine, whatever. We have to be on the ground. Come, we have local opposition. Forget about Jammu Kashmir. We have local opposition in Maharashtra also. हमको नहीं चाहिए project, but we have to be on the ground. We have to do the survey. Yeah. If you don't give the maps, the engineer can sit in his office and do all the design and all those things. But if he doesn't have the survey, he will not be able to do it. So कुछ भी हालत में हमको जाके साइड पे we have to face the public or the environment. आपसे जितनी अब तक बात की, वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि इन मेनी फील्ड द वर्क इज मोनोटोनस फॉर इयर्स. मतलब आप जैसे आज एक काम करते हो ना, टुमारो यू वुड बी डूइंग द सेम वर्क, बट आपके काम के अंदर व्हेन यू आर ऑन द Yes, ग्राउंड यू विल फेस न्यू डिफिकल्टीज very एवरी true. डे. क्या होगी पता नहीं होता है, Yes, yes, एंड yes. देन यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन देन एंड देयर, ताकि वो काम आगे बढ़ Correct. सके. एज यू सेड, वेरी करेक्ट थिंग. बहुत लोग ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, इवन व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा. Right, सर्विंग नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, वो right, जाना ही है आपको ग्राउंड पे. right. But sir, one more other thing that I got in this conversation is that Assam, Maharashtra, J&K. So I think every corner of this country आपने काम किया हुआ है. Yes, practically all the states except for a few states. But we have worked right from Jammu Kashmir up to Kerala. We have done works in Lakshadweep, from Gujarat up to Assam, all the states in between. Most of the states we have done some kind of project. लक्षद्वीप सर, इस पे थोड़ा बात करते हैं. Yeah. अगति आइलैंड पे आई बिलीव आपका Yes, प्रोजेक्ट था, yes, yes. एंड इट्स अ वेरी, जितना मैंने देखा है, इट्स एकदम बहुत ऐसे उसको कंजेस्टेड एरिया में Correct. रनवे जो है बनाया गया है, एंड ऑल Correct. दैट. वहां पे कोई स्पेशल चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आई थी? So Lakshadweep was a very interesting project. Not just because it was an island, but it is sort of close to India, but it is not that accessible. So first thing was getting to Lakshadweep. You have to get the clearance from I don't remember what exactly he's called. He sits in Cochin, so you have to get a permit to go to Lakshadweep. So right from that point, you have to get a permit. Then you go there. So locations like Lakshadweep, वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट कैसे करना है. So simple things like, अरे my team, where will they live? कहाँ से खाना मिलेगा? Lakshadweep is a very different place. If I have people who are from Maharashtra, they will not have an easy day eating food from Lakshadweep. So the first thing was, I usually go to some interesting locations. I go there, do a reconnaissance survey. Reconnaissance meaning कहाँ पे कैसे क्या है. Simple things like where can they stay, how is the project site, what is the difficulty, where can we take some control points, where can we put the machines and things like that. So this is a reconnaissance survey. So first I had to go there to actually see कि अरे it's an island where my people will live. I have to interact with the locals. I have to convince them कि अरे बाबा, my surveys are going to come. They are doing this important project for your island itself.
So get their help. So वहाँ पे let's say I think यहाँ पे I think this was in 2013 we did the project in Lakshadweep. यहाँ पे अगर 50 रुपीज़ का पेट्रोल है, वहाँ पे 200 रुपये का पेट्रोल है. I mean, I'm just quoting roughly, but the petrol itself is expensive because you have to, import. Logistically, it is difficult. So वहाँ पे गाड़ी भी एक मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्ट करना है, तो all the costs are also multiplied by 4. तो all these things have to factor in. So यहाँ पे मुझे कुछ सर्वे करना है. So that island, if you see on Google Earth or any map, it's a very small strip of land. Yes. और वहाँ पे ही एयरपोर्ट का रनवे है. सो द प्रोजेक्ट वाज फॉर एक्सपेंशन ऑफ दैट रनवे. सो पूरा सर्वे आइलैंड का पूरा करना है. यू हैव बैथीमेट्री सर्वे विच सर्वे यू डू फॉर अंडर वाटर. देन you have survey on the land. You consolidate, merge both the data to get the consolidated survey drawing. That is the survey part of it. We also did the geotech investigation part of it. तो geotech investigation same. बोट को लेके प्लेटफॉर्म पे डाल के यू पुट द रिग एंड बेसिकली जमीन के अंदर. यस. सो अंडर सो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन. सो सॉइल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो सम पीपल से. सो यू बेसिकली ड्रिल होल्स. You take the sample of soil and rock, and then you do testing in the lab, and then you get what are the parameters, what is the rock strength, soil properties, and then that is an input for doing all the designs. So bridges या structures आपको foundation करना है, कैसे करना है, what depth you need to put the foundation. So all these things play part for the geotech investigation. और आपने अगति आइलैंड में समुद्र के अंदर ये किया? समुद्र के अंदर, जमीन पे भी और समुद्र के अंदर दोनों में किया. Okay. It was a very interesting project. So then you have for Lakshadweep Island, that island, if you see, on one side it is protected in coral reefs and things like that. So the water is quite shallow. But on the other side, it is, so if you go, let's say about maybe a few kilometers, suddenly the depth increases from a few meters to few hundreds of meters. पूरे क्लिफ के जैसे. Yes. So it's like a cliff. And then you have like there was a very narrow channel where it connected the shallow part and the deep part. Okay. So the locals, what they told me was, when I was doing the reconnaissance, they shared the story with me. This is a very challenging, very dangerous part of it. उन्होंने बताया कि इधर आप काम भी करोगे तभी इधर मत जाओ, मतलब पानी में मत जाओ. Go using a boat, that's fine. What they said was, because it is connecting the shallow and deep part, there's a lot of current, water current. Yes. बहुत strong current है. So what they said was, before I came there ना, last month there were 2 doctors who had come and they were swimming and they swept out. The current took them away. Current took them away. They didn't even find their bodies. So all these challenges play a part when we are doing the survey. We are the first people. We need to know all these challenges, and every site will have a different challenge. Yes. यहाँ पे तो सर चलो लक्षद्वीप में एटलीस्ट जब आप गए थे तो एज इंडियन लोकल आदमी से बात तो हो गई. करेक्ट. बट यू हैव डन प्रोजेक्ट्स अब्रॉड. Yes. घाना में किया, अपने अफ्रीका में किया, मालदीव्स में किया. करेक्ट. Few experiences from like Africa, would you share? क्या प्रोजेक्ट था, क्या कैसे किया था? So we did a project in Ghana, Africa. So this was a 100-kilometer railway line, a single lane railway line, which Indian Exim Bank had funded. We did this project for Afcons infrastructure. Very good company. So what we did was, they wanted surveys who they could rely on. So we had an long association with Afcons. So we sent our surveys from India to Ghana. Again, before sending that, I did the recon just like I did in Lakshadweep. So Ghana is a very beautiful country and people are quite friendly. But you can only know that if you go there firsthand. Okay. And interact. So the entire 100-kilometer alignment, myself and I had one more colleague with me. So we did a recon for the entire alignment. So we had to assess कि यारे कहाँ पे सर्वे कर सकते हैं, कहाँ पे
डिफिकल्ट होगा, एंड इट वाज ऑल क्रॉस कंट्री. So parts of it were going through, agriculture fields, forest areas. Parts of it were going through, so you can say it was greenfield and brownfield. So there was existing infrastructure also. It went through some towns where they had actually left out the railway corridor, but it was going through pretty, congested areas. Okay. So we had to do a recon for that, where we put the control points, where our people can stay, how to go about local transport. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके, अरे सिंपल थिंग्स लाइक यार मेरे को गाड़ी रेंट करनी है, यार इंडिया में बैठ के थोड़ी आपको उधर का कोई रेंटल एजेंसी मिलने वाली है. सो यू गो, यू टॉक टू पीपल, यू गेट सम लीड्स, यू टॉक टू हिम, देन ही टॉक्स टू समवन एल्स, ही टॉक्स टू समवन एल्स, यू गेट दैट लीड. सो सिंपल थिंग्स लाइक वहाँ पे ड्रोन सर्वे किया हम लोगों ने. सो ड्रोन सर्वे यू गेट फोटोज लाइक जीबीज ऑफ फोटोज, लॉट ऑफ डेटा. तो प्रोसेसिंग तो मैं इंडिया में करने वाला हूँ, नो मैं उधर से इधर कैसे लाऊंगा. सो आई हैड टू गेट सम लीज लाइन इंटरनेट के लिए. So all these things have to play a part. So all these things are these come with experience. So since we are doing this for the last 40-50 years, we know what to ask and what to expect to some extent, what surprises we can encounter. So ये सब experience का part है. So this was the Ghana project. Okay. Then even the Maldives project में we had to do survey for wastewater and water treatment facilities. तो वहाँ पे भी it was on 7 different islands. तो अभी 7 आइलैंड में 7 लोगों को मैं किधर रहने का कैसे करूँगा, क्या करूँगा. सो लकीली देयर वाज सम कॉन्टैक्ट from India who they had a construction project where we were assisting for the survey part of it. So luckily they had some contact with the local villages, मतलब वो island पे जो थे. तो every island we stayed in some home stay. किसी के घर पे रह के फिर वही हमको खाना भी देते थे. तो you have to improvise sort of. So this sounds so much like जाके exploration करना पड़ता Yes, है. yes, surveyors are the explorers. They are explorers at heart to begin with. Like you are the first one to discover certain things. Yes, कि मैं देख कर आया हूँ वहाँ पे ऐसे जाना पड़ता है. correct, So you can prepare the guys coming later on. correct. कि चाहे वो construction crew हो या जो भी हो. Yes, correct. In fact, for Ghana project, I just remembered. So their entire Afcons engineering team was in Mumbai. हम लोग सर्वे उधर भी थी उनकी, मतलब they had a team there, but the design engineers and all those detailing was done mostly from Mumbai. Execution team वहाँ पे थी. So one thing is doing the survey and giving AutoCAD drawings for the plans and everything. But the one aspect of civil engineers, what they want is feel of the site. Site actually कैसी है. So we also did drone videography of the entire alignment, and we gave a high resolution video to the engineers sitting here. So if they had some issues, उनको कुछ देखना है, तो क्या है सर्वे में सब कवर होना चाहिए, बट सर्टन थिंग्स अभी यार इज अ डेंस वेजिटेशन हियर. वहाँ पे आपको ड्राइंग में पॉइंट दिखेंगे, बट यहाँ पे कैसे दिखता है, Yes. विजुअल फील जो है ना, दैट यू गेट इफ यू सी इट फर्स्ट हैंड. और अभी क्लोजेस्ट थिंग इज ड्रोन वीडियोग्राफी. तो वहाँ पे यार यहाँ से मुंबई से अफ्रीका जाना है, इट्स अ वेरी बिग टास्क. तो इफ यू जस्ट सी अ वीडियो, यू गेट अ फील ऑफ इट. इफ अ न्यू इंजीनियर कम्स इन टू योर टीम, अरे वो कैसा है, क्या है, अरे वीडियो दिखा दो उसको, तो वीडियो देख लेगा, ही विल गेट अ फील ऑफ द एंटायर अलाइनमेंट. सो दैट इज समथिंग विच दैट न्यू टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस एनेबल्ड. So basically जब इंजीनियर जा रहा है कोई बाद में क्रू जा रहा है, you guys make sure कि कोई unforeseen surprises उनको करेक्ट, ना करेक्ट, मिले. करेक्ट, मेकिंग श्योर कि जितना हो सके उतना डेटा उनके पास में करेक्ट, पहले ही अवेलेबल हो, करेक्ट. so they can accordingly prepare. We'll move on to the next question, sir. बाहर के देशों में तो बहुत ने उन देशों के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, बट इन इंडिया in last decade or so we are seeing rise of exponentially big projects. Yeah, पोर्ट में, एक्सप्रेसवेज वगैरह वगैरह. airports. बट समवेयर सर वी आर आल्सो सीइंग कि रेजिस्टेंस भी उन प्रोजेक्ट्स को मिलता है. जैसे आपने भी एक स्टेटमेंट बीच में दिया था कि हम जाते तो बोलते नहीं चाहिए हमको प्रोजेक्ट.
सम प्रोजेक्ट्स लाइक वाधवन पोर्ट और उसके आसपास में सब डेवलपमेंट होने वाला है. मेरे को बस एक जनरल ओपिनियन जानना है. दिस माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वेइंग, बट हाउ डू यू सी दिस रेजिस्टेंस टू इंफ्रा इन योर ओपिनियन? So it's mostly political, to be very honest with you. But to some extent, I will say कि it is understandable. For example, Vadhavan Port में, it's near Dahanu. वाधवान पोर्ट का जो एरिया है, वो एरिया में देयर आर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप, ऑल बिग टिकट आइटम्स. जैसे वाधवान पोर्ट हो गया, उसके बाजू में फिर आपका जो वेस्टर्न रेलवे का लाइन है, उसके बाजू में डीएफसीसी में भी उनका लैंड एक्विजिशन हुआ है. अभी वाधवान पोर्ट में लैंड एक्विजिशन होने वाला है. देन यू हैव द डीएफसीसी कॉरिडोर. देन यू हैव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसका लैंड एक्विजिशन है. देन यू हैव हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसका एक्विजिशन है. सो यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिसमें लैंड एक्विजिशन हो रहा है. सो एज अ विलेजर, इफ आई एम लिविंग देयर, आई विल ऑब्वियसली गेट फ्रस्ट्रेटेड. अरे यार, इतने प्रोजेक्ट्स, मेरा इट विल जस्ट बी अ स्लिवर ऑफ लैंड, बट स्टिल इट्स लाइक एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूसली हो रहा है यार. सो दैट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अंडरस्टैंडेबल. बट व्हाट हैपेंस इज politicians sort of unduly or unnecessarily exploit that for their own gains. All these projects are going to benefit. For example, Vadhavan project is going to benefit the villages tremendously. ये जो इकोलॉजिकल ये है वो है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, दीज आर देयर. बट क्या है ना कि इफ इंडिया एज अ कंट्री हैज़ टू ग्रो, of course we have to take care of the environment, but it can't be at the expense of development. And frankly speaking, all these projects, you have to look at it from a broader perspective. Yeah, you look at it from a 50 or 100 year horizon. ये किधर लेके जाने वाले? If we don't do this, what is the alternative? What are the local people are going to do right now? They're just going to do farming and local industry है, वो उतना चलते रहेगा. Vadhavan is going to give you so much exposure and job creation, industry is going to develop on all those things. So Vadhavan is just one project, but projects in general, इंडिया में आपको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो देयर इज गोइंग टू बी सम एनवायरमेंटल कॉस्ट. एंड एज अ सिविल इंजीनियर it might be a little harsh, but you have to do it. So it's something like you have so many projects. So even नर्मदा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट गुजरात में जो था, देर हैव बीन स्टडीज वेयर दे हैव स्टडीड कि आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट people have actually benefited, and because of the project the farmers have also benefited. So there are innumerable projects where, because of some short-sighted politicians or some environmentalist, because of their own, I don't know what vested interests, they oppose it, but it's generally not for the greater good, generally speaking. Yes. इनफैक्ट सर, अगर हम देखें तो नर्मदा का तो है ही दूर तक, बट इवन इन अर्बन सेटिंग आई थिंक नवी मुंबई वुड हैव वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग और हाईएस्ट नेटवर्थ वाले विलेजर्स, जो विद इन 2 जनरेशंस जिनकी वेल्थ जो है वो 20 30 50 गॉड नोस हाउ मेनी एक्स Yes. हो गई. एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा, बट द लाइफस्टाइल, द अपॉर्चुनिटीज टू द अपकमिंग जनरेशंस, जॉब्स, बहुत चीजें होती है. सो समवेयर आई बिलीव आप जो बोल रहे हो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड मोर ब्रॉडली, क्योंकि Yeah. जनरल लोग जो है बहुत सरफेस पे देखते हैं. Right. बट सर एट द सेम टाइम, ये तो हमने बात की बन रहे प्रोजेक्ट्स, बट वन देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट आल्सो समवेयर. एक तरफ महाराष्ट्र ने समृद्धि महामार्ग जैसा एक्सप्रेसवे बनाया, वर्ल्ड क्लास, मतलब जो उस रोड पे जाता है दे विल टॉक अबाउट दैट रोड विद सम अदर ड्राइवर. Yes. और एक तरफ महाराष्ट्र का दूसरे रिफ्लेक्शन में देयर इज द मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे जो बन ही नहीं पा रहा बन ही है नहीं फॉर पा सम रीजन. सो ये यू आर समवन हु लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एक बंदा जो फील्ड में होता है वो ज्यादा अच्छे से समझता है. Yes. सो हाउ डज दिस लाइक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट अराइज? So we have done the survey for Samruddhi Mahamarga. About 250 kilometers of patch we have done the survey. So I know that project from inception, Samruddhi Mahamarga. I will juxtapose that with the Goa highway.
In very simple terms, Goa Highway has been mired in all these difficulties, I believe, because of local politicians. Now, Samruddhi Mahamarga, on the other hand, there was a political will. There was a need, came secondary. There was a need to tie all those Vidarbha areas, but there was a political will. वो रोड करना ही है. Politicians में. Yes, that was there. And the way they executed that, so what they did was they appointed nodal officers just to crack whip on the local administrators, tahsildars, talatis, or even local engineers, uh, and they had strict timelines. If you did not do, it was reported directly to the MD. Okay, MD. MD, MSRTC. MSRTC, yeah, MD. And he was a very good administrator. Mopilar Saab was a very good administrator. I mean, so when you have that will and when you have the right people in place, you can make wonders. I mean, I'm actually very surprised, pleasantly surprised, I will say, कि ये एक ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने सर्वे किया है, and I'm driving on that car, I'm driving on that road. Less than 5-6 yeah, it's pleasant. I was pleasantly surprised कि इतने स्केल का प्रोजेक्ट है जो इतना क्विकली हो गया, बन गया, and to the right standards. Of course, there'll be always some kind of plus and minuses, but किया, it's full marks to them. So sir, as you said ना, standards, थोड़ा कहीं भी 19-20 हुआ और समृद्धि की हम बात कर रहे थे. We were also discussing this some time back. इंडिया में लोगों को आदत नहीं है of big infra. Yes. या कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रा. हमारे यहाँ पे मोस्टली प्रोजेक्ट भी जुगाड़ू बनते थे. Yes. पहले बन गया फिर कुछ तो थोड़ा ऐड कर दिया काइंड ऑफ. बट नाउ वी आर सीइंग दिस, और एज पीपल आर नॉट हैबिचुअल टू इट, उसके नेगेटिव साइड्स भी देखने मिलते हैं. सो आई वांट यू टू शेयर सम लाइट ऑन दिस कि यू हैव बीन टू यूएस, आपने वहाँ पे लंबे समय तक आप रहे भी हो. ये डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग इंफ्रा, और हाउ डू आई से दिस, मतलब इंडियन लोगों को और कितना समय लगे, एंड व्हाट शुड इंडियन पीपल डू टू गेट अडैप्टेड टू दिस इंफ्रा एज फास्ट एज पॉसिबल. सो देखो, यूएस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंटरस्टेट बना, इट वाज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू. इन द 40s 50s उन्होंने पूरा बनाया. तो इमेजिन दे हैव ऑलरेडी हैड 80 years टू गेट यूज टू इट. दे आर परफेक्टली यूज टू इट नाउ. अभी इंडिया में अभी बन रहा है. लास्ट 10-20 years वी हैव स्टार्टेड डूइंग बिग एक्सप्रेस हाईवेज. दिल्ली मुंबई हो गया, आपके यूपी में भी काफ़ी सारे हैं. अभी ये समृद्धि महामार्ग है, मुंबई नागपुर, एंड दीज आर गोइंग टू एक्सपांड. बट व्हाट हैपेंस इज पीपल हैव टू गेट यूज टू इट. जैसे यू गेट न्यूज़ कि समृद्धि महामार्ग पे पीपल फॉल asleep while driving. We have not gotten that used to like normal persons. I'm not talking about transporters and like professional drivers. They're obviously वो तो उनका ज़िंदगी उसी पे है. But normal XYZ person like me or you who generally just drive for a few hours here and there. But if you tell कि अरे नागपुर जाना है, so when I was in the US, I could easily drive for 10-12 hours. Obviously, I would should take breaks in between. But वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा है. वहाँ पे people are used to traveling long distances. US is like 3 times the size of India. इंडिया में कैसा है ना, इट्स ऑल शॉर्ट जर्नीज. देन यू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो विच इज़ गुड. बट यहाँ पे रोड रिलेटेड जो है ना, इट विल टेक a few years or maybe a decade or so. Well, people are exposed more and more to these mega projects. जैसे अभी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में if you have a दिल्ली guy come to मुंबई, he will be mad. मतलब वो पागल हो जाएगा कि अरे क्या मेट्रो किधर है, नहीं है. एंड इफ़ यू टेक मुंबई guy to दिल्ली, he will say अरे यार दिल्ली मेट्रो इज अमेजिंग यार. वो उनके लिए कुछ नहीं है नया, बिकॉज दे हैव गॉटन यूज्ड टू इट. 2010 से अभी दिल्ली मेट्रो इज ह्यूज. I mean, it practically covers entire Delhi. So it's
they're getting used to it. It'll take time, but we will get there. आदत की बातें हो आदत की जाएगी. बात हो जाएगी. जो ongoing criticism है, this is like वो बस कुछ समय की बात है वो. Yes. It will go away and people will in fact Yes. expect government to make Exactly, more. and then we will also, our standards will also go up. अभी कुछ साल पहले, मतलब 10-15 साल पहले तक मेट्रो वी ओनली न्यू अबाउट इन कलकत्ता, राइट? अभी नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग एवरी tier 2 सिटी ऑल्सो शुड हैव अ मेट्रो. Metro. चल रहा है अभी. Why? How did we get to this point? Because now we are getting exposed to these new forms of transport and new infrastructure. तो धीरे धीरे वो बढ़ने ही वाला है. Yes. सर एक थोड़ा डाइवर्जन लेते हैं यहाँ से. आई डोंट नो इफ दिस इज मतलब ये मैं क्यों यहाँ पे ये लाइन दे रहा हूँ, बट फ्यू ऑफ माई ऑडियंसेस हु आर वेरी यंग दे माइट रिमेंबर देयर वाज अ वीडियो गेम कॉल्ड GTA सैन एंड्रियास. उसमें एक मिशन के लिए ना उस शहर के मैप्स वो चुराते हैं and then they basically whatever they go and execute the mission. But when we were talking as few minutes back, आप कह रहे थे कि इंडिया में गेटिंग मैप्स बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मिल पाते. एंड दैट इज समवेयर लाइक वो एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है फॉर पीपल हु आर एक्चुअली बिल्डिंग दिस कंट्री. मेरे को ये पूरा टॉपिक के ऊपर अब एक लाइट अगर डाल सके तो. सो इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया is the nodal agency for doing the official surveys of setting up of control points or any geodetic survey. Topo sheet creation. So what is topo sheet? Topo sheet is actually very accurate maps, but those are at large scale maps. So that Survey of India does. So these topo sheets are also very useful and important for infrastructure planning. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये रोड मेरे को इधर से करना है, तो इधर से कर सकते कि नहीं कर सकते. सो यू नीड सम, बिफोर वी डू एक्चुअल ग्राउंड सर्वे, वी नीड सम मैप, सम बेसिस कि इधर से फिजिबल होगा कि नहीं होगा. सो फॉर दैट यू नीड दैट टोपो शीट. सो दिस आर वेरी हाईली एक्यूरेट मैप्स, ब्रॉड लेवल मैप्स, बट नेवरदलेस वेरी यूजफुल. तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहता है. देन यू ऑल्सो हैव बेंचमार्क्स, GTS बेंचमार्क्स, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश लोगों ने किया था. We have followed it. We have kept it. We have preserved it and all those things. तो ये सब चीज़ें सर्वे ऑफ इंडिया करती है. In order to get this data, you have to jump through a lot of hoops. You have to give an undertaking and all those things. Then they check and they give you that topo sheets for safekeeping. If you get it lost or they are stolen, you have to answer. You have to get a police report and all those things. It's a very big hassle. So, and then the GTS benchmarks, they're just monumentations on the ground where a known level is there with respect to mean sea level. So all the surveys have to be connected to that particular benchmark. मतलब वो level जो भी प्रोजेक्ट करना है ऊपर नीचे किधर से, you need to have some reference. So that is that GTS benchmark. So all these things are preserved by and kept and updated by the Survey of India. तो ये सब चीज़ें they make it extremely difficult to get it. एंड देयर रीजनिंग इज कि अरे नहीं ये पब्लिक को दे देंगे तो फिर वो डिस्ट्रॉय करेंगे, दे विल मिस यूज इट. माई क्वेश्चन टू देम वॉज, आई हैड मेट वन ऑफ द pretty senior officials in Bangalore, one of the conferences, and I asked them, नहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. I told them flat out कि I am a surveyor, I have the utmost respect for that benchmark. I will never do anything to destroy it or displace it or misuse it. I will keep it as is. And anyways, these benchmarks are in some protected areas, PWD guest house या फिर गवर्नमेंट लोकेशंस, तो इट्स एनीवेज प्रिजर्व्ड. जनरल पब्लिक को उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, वो उसको समझेगा भी नहीं कि ये क्या है. सेम विथ द टोपो शीट्स. आई टोल्ड हिम कि व्हाई आर यू कीपिंग इट सो रिस्ट्रिक्टेड. अभी तो गूगल अर्थ के ज़माने में कोई भी XYZ आदमी गूगल अर्थ ओपन करेगा, प्रिसाइज मेजरमेंट, उसको जो भी अगर कुछ करना है हार्म तो गूगल अर्थ पे मिल ही जाएगा. फॉरगेट अबाउट दैट. Topo sheet quality maps are already available in the US. I think there's some university, they have all the topo sheet quality maps. Obviously they term it something different, but they have maps ready with them in digital format also. So what are you, and all these things are funded by taxpayer money. तो जब भी ब्रिटिश लोगों ने भी जब भी किया था in the late 1800s, the GTS,
great trigonometrical survey. They surveyed the entire Indian peninsula. So they surveyed and they came out with GTS benchmark. They came out with a booklet. I have that this thing. So उसमें भी नीचे लिखा है ₹5 only. So they even the British people were selling it. And now if you are doing this with the taxpayer money, you shouldn't keep it so restricted. You preserve it. That's fine. But you don't make it so restrictive कि it becomes difficult for a even the end user like me who is a survey company. आप थोड़ा सा easy कर दो उसको. Why don't you digitize it? तुमको वो डर है ना खराब हो जाएगा घूम जाएगा तो नहीं बट कैसा है, सो जीटीएस बेंचमार्क वो मॉन्यूमेंट रहता है तो वो इट हैज टू बी फिजिकली ऑन द ग्राउंड. उसका जो वैल्यू रहता है इट्स जस्ट अ वैल्यू 5.249 मीटर्स. दैट वैल्यू इज विथ रिस्पेक्ट टू सम मीन सी लेवल का है वो, इट्स अनदर स्टोरी. बट वो फिजिकली रखना पड़ता है, दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड. But the topo sheet part of it that can be digitized, that they've already digitized. They have already digitized everything. They have everything. They have not. And then this But easily available नहीं है. है available है. But for specific uses you have to give a undertaking. आपको सब बताना पड़ता है. वो भी एक 1:, कुछ 25,000 स्केल है ऐसा कुछ उतना ही अवेलेबल या 50,000 स्केल ऐसा कुछ particular scales only they will make it available. Or this adds time, effort and money. Everything. For every project. Everything, yes. Okay, so I think this is something government should think on. Maybe हो भी जाए future में. So अभी क्या करते हैं so ये आते रहेगा, ऐसा इंजीनियर्स बोलते हैं, ये आते रहेगा. आप गूगल से डेटा निकाल के आप बेसिक फिजिबिलिटी लेवल कर दो, बिकॉज ईजियर, क्विकर एंड faster and more up to date, so to speak, because the topo sheets are updated every few years or something like that. Google Earth is like आपको एक साल के 3-4 इमेजेस मिल जाएगा. So if there is any change in तुरंत मिल जाएगा period तो वो भी yes, समझ में आ जाता है. yes. So sir, let's talk about your and your family's journey in this field. मतलब even अगर कोई चीज 3-4 generations तक जाना शुरू होती है ना, people start diverging या फिर कुछ और डोमेन में काम करना शुरू कर देते हैं. But your family has like stuck to it और वो मास्टर कर लिया है. Can you share the company's entire journey? कहाँ से आज तक कैसे आए? Yes. So actually our company was established by my grandfather. And the original partners were my grandfather and my great grandfather. So P.N. Shidhore Civil Engineers Private Limited, that's our company name. So P.N. Shidhore is my great grandfather. So my grandfather was actually working in railways, and then he left railways and he started the company in his mid 40s. So it was a very big risk that he took in the 70s to actually start a company. And he had that conviction he saw, because in railways you do a lot of surveys, so he had that conviction and he saw this I can do it properly, and he started doing a little bit here and there. And then we found good clients in ONGC, Sidco, and that gave us traction. My father joined in 1980, and then he did that Assam wala project, तो वहाँ पे गए, तो then there was no looking back. And I joined in 2009-10. There were a lot of ups and downs in between, from 1980 to 2009-10. Even now we have lots of, it's a normal process. So we have been focused more on survey and geotech investigation, but I have done my MS in transportation engineering. So we have done projects in transportation field as well. We have done projects with IIT Bombay. In fact, the Indo HCM, Indian Highway Capacity Manual, I think in chapter 6, IIT Bombay has acknowledged our work. We have done work in data collection of traffic survey and topographical survey. So our company has been named, I think in the entire Indo HCM, probably it's only our company which has been single-handedly named as a company for their contribution in doing the topo survey, for the data acquisition, for the studies for that particular chapter. So that's been our journey, but of course there are a lot of ups and downs. So that's a little bit of our company. But for a company to sustain so many generations is itself a big milestone to achieve. Yeah, we try. So that's I always tell our clients we have a huge legacy to uphold.
and so that's why the quality is paramount for us. We have to keep our name. It's my great grandfather's name, so that is something which we really strive to keep up. So सर, मुंबई में बहुत प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, those are very visible to the metros. और आज in fact as we speak one of the most significant project is getting commissioned. और एक प्रोजेक्ट जो मुंबई के अंदर दिखता नहीं है लोगों को, दैट्स दी वाटर टनल प्रोजेक्ट. Right. मैं चाहता हूँ आप आंसर तो करो ही कि व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज, बट आई आल्सो वांट यू टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड टू आवर ऑडियंसेस कि ये प्रोजेक्ट जरूरी क्यों है और उसका विजन क्या है एंड कितने बड़े स्केल पे ये है. Yes. So I think last month there was an article in Times of India where I think they had come out with a number of uh, water tunnels and how Mumbai is fast catching up with New York. New York has the largest length of water tunnels in the world, and Mumbai is closing pretty fast. और अभी जो वाटर टनल के प्रोजेक्ट्स जो मुंबई में चल रहे हैं, which they are studying right now, they have bid out for contractors and which are already under construction. So if you add them, Mumbai is going to surpass New York pretty soon in terms of length of water tunnels. So we have done surveys and geotech investigation for quite a few water tunnels. For BMC, recently we did a water tunnel investigation and survey for Yevai to Kashiri. The next tunnels are from Kashiri to Mulund. Then there are other water tunnels, tertiary treated water tunnels from Dharavi, Ghatkopar to Bhandup wastewater treatment facility, from Bhandup WWTF to Bhandup complex. All these water tunnels are going to be linked, and all these are going to cater to the needs of Mumbai. क्योंकि क्या है ना, मुंबई इज ग्रोइंग. ऑफ कोर्स यू सी, एज यू सेड, रोड्स, रेलवे, मेट्रो, यू सी अबव ग्राउंड, बट वाटर इज समथिंग विच एवरी पर्सन विल नीड. आपको रोड नहीं लगेगा, मेट्रो नहीं लगेगा, पर पानी तो लगने ही वाला है. सो हाउ डू वी गेट दिस वाटर? ऑल दीज रिजर्वायर्स, मुंबई गेट्स मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम रिजर्वायर्स विच आर 50 और 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई. तो पानी कैसे लाओगे आप? So there are overground water pipelines तो है ही, but those are prone to pilferage, maintenance issues, obsolescence. आपको expand करना है तो आपको ज़मीन नहीं है. How will you do it? Yes. So the answer is water tunnels. So these water tunnels are 3-meter dia water tunnels, are huge water tunnels. And the advantage of water tunnels are, you can do high pressure, capacity ज़्यादा होता है. Then Because it is a tunnel. It's a water tunnel. अच्छा. And these water tunnels are 100-meter deep. Okay. Below the ground, more than 100-meter deep. अभी there are locations. So this is like lower than any metro. Exactly, Like exactly. बहुत ज़्यादा And नीचे होता है. precisely the reason why they are so deep, because in Mumbai you have high rises, you will have deep foundations, you will have bore wells here and there. So it has to be so deep कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से वहाँ पे कुछ होगा नहीं. तो दैट इज़ वाई इट्स सो डीप. तो उसके लिए फिर अलग चैलेंजेस है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन. हाउ विल यू डू द डीप बोरल्स? सो वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हु हैव द कैपेबिलिटीज टू डू डीप बोरल्स. वी हैव डन बोरल्स अप टू 200 meters also. So these are some Mumbai projects, BMC projects है. Similarly, SIDCO is also doing water tunnel projects. So Hetone Dam say you have water tunnels coming up to Jite where they have the water treatment plant. From Jite you have your master balancing reservoir MBR वहाँ के यहाँ पे. So all these these are getting executed right now as we speak. There are contractors who have, I think the TBM is going to be lowered in this month. I think they're going to start the tunnel boring machine. So वो हो रहा है. There are many other water tunnel projects. So these are projects which we have Yes. actually executed. I was at a conference few years back. तो वहाँ पे जो मित्रा है महाराष्ट्र की, जो Right. नीति आयोग के जैसे Yes, जो yes, yes, yes. I believe he's no longer in the position. प्रवीण सर करके थे. Praveen Pardeshi. Yes, yes, yes. Right. So उनका एक presentation था. So he had shown a map जहाँ पे मुंबई से 100 किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी बड़ी वाटर बॉडीज है, वहाँ का सब पानी मुंबई लेता है. Yes. मुंबई एंड एमएमआर Yes, बेसिकली. yes. एंड ही वाज showing a plan जिसमें ये भी था at a very small level, but basically it was like हर कोई डर तो रहा है कि पानी आएगा नहीं आएगा फ्यूचर में,
बट somehow the other मुंबई में पानी बहुत अच्छे से आता है सबको, and in fact one of the most cleanest water also. Yes. So in terms of water vision, BMC is doing a good job that PNC Mumbai is. that way is extremely lucky. See, we are in a water surplus region. We have monsoons. Yes. You know, thankfully we have monsoons and we have abundant rainfall. So we have projects like desalination plant, which don't make any sense in Mumbai. Politically driven projects, but they don't make sense. But you need projects like Gargai Dam, Damanganga Pinjal Dam. So Gargai Dam, we have done a survey for Gargai Dam as well. So that is a very interesting project, which is, it is such a beautifully planned location that it is just north of Modak Sagar. All you need to do, because Modak Sagar is already connected using water pipelines. Yes. All you need to do, if you have a new dam in Gargai, you need to just build a 2 kilometer water tunnel underground and both these reservoirs will be connected. Act as one. आपको कुछ पानी का नया पाइपलाइन बनाने की जरूरत नहीं है. So we need projects like this. These are beautiful projects. सर whenever we see ये मेट्रो बन रही है, ये बन रही है, और ना उसमें बार बार यूटिलिटी शिफ्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, यूटिलिटी शिफ्टिंग का टेंडर अलग है, और समटाइम्स मिसहैप्स आल्सो हैपन कि पाइप तोड़ दिया गलती से. Yes. समहाउ चलो छोटा मोटा अपने देश के अंदर लोग बिना पूछे गवर्नमेंट से बहुत काम करते हैं, बट समवेयर ऑन द अदर जो बड़ी चीजें हैं, पावर लाइंस, डेटा लाइंस, ये हमेशा कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना शुरू करते हैं. इट बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. Yes. एंड एज ऑफ माय नॉलेज हमारे पास में कोई ऐसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैप नहीं है वेयर वी आर लाइक बेसिकली हैविंग डेटा फॉर एवरीथिंग, ताकि प्लानिंग बेटर तरीके से हो सके. Yes. सो डू यू थिंक ये चीज होनी चाहिए, या अगर हो रही है तो कहाँ तक पहुंची है, एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस So, entire thing? so what happens is, I'll tell you very honestly, we should have utility maps in a consolidated location or in a particular place, but that is difficult. The reason being, every utility is owned by a separate agency. They have their own bureaucracy, they have their own way of working, they have their own secrecy. Some people are very open to sharing the data. Some people are like, हमारे पास है ही नहीं डेटा, हमको ही नहीं पता, हमको ही पता नहीं है, हम है वहाँ पे बट हमको पता नहीं है. So, हमारे लोगों ने क्या किया उधर जाके हमको नहीं पता. पता नहीं है, पता वो सर 50 साल पहले किया है, अभी हमको पता नहीं है किधर है, क्या है, कैसा है, कुछ पता नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स एड अप टू द कॉम्प्लेक्सिटी. तो क्या होता है ना, एवरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना, यू नीड अ, जैसे हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, यू ऑल्सो नीड टू डू यूटिलिटी सर्वे. तो यूटिलिटी सर्वे इज डन जनरली यूजिंग अ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, GPR, Okay. ground penetrating radar. So what it basically does is sort of like a very hazy X-ray. Okay. तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ यूटिलिटी दिख रहा है, रफली ये डेप्थ पे है. आपको कुछ आइडिया मिलता है कि कौन, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेज कि यार हाँ, ये MGL का पाइपलाइन है क्या, नहीं तो ये इलेक्ट्रिकल का डक्ट है. इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा. वो करने के लिए आपको यू नीड टू पुट अ ट्रायल पिट्स, यू नीड टू डिग ट्रायल पिट्स एवरी 100 मीटर्स और सो टू गेट एन आइडिया. हाँ, अरे ये दिख रहा था, ये क्या है, तो वो आपको आँख से देखना पड़ता है, वो खड्डा करके. Find surprises on your own. यस. तो वहाँ पे वो हो जाता है कभी कभी, मतलब वो यार ये किधर से आया है, पता नहीं मेरे को. तो ये दैट यूटिलिटी सर्वे हैज़ टू बी डन डिलीजेंटली, खास करके मुंबई जैसे एरिया में. बाहर जैसे इफ़ यू हैव अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, इट generally can be skipped, but people usually don't skip it these days because it's small price to pay. नहीं तो बड़ा ब्लंडर हो जाता है. There are gas pipelines in Navi Mumbai which ONGC, Reliance they have put in. गेल का पाइपलाइन है, तो आपके मार्कर्स रहते हैं, तो नॉर्मल सर्वेल विल पिक अप द मार्कर्स, बट कभी कभी मार्कर्स डिस्ट्रॉयड रहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे. तो ऑल इफ यू टैप दैट गैस पाइपलाइन, इट इज़ अ ह्यूज ब्लंडर. मतलब वो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट रहेगा ना, उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको वो रेक्टिफाई करने में लग जाएगा. से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा ना, वो 150 करोड़ आपको लग जाएगा वो पाइपलाइन का रेट, बिकॉज इट आपका जो भी गैस प्रोसेसिंग या फिर पेट्रोलियम प्रोसेसिंग या LPG का जो दैट प्लांट इज कंटिन्यूसली रनिंग, यू कैंट स्टॉप इट.
अगर ये हो गया तो you have to stop it. Every day of stoppage costs crores and crores of rupees. तो दैट इज़ वाई कभी कभी होता है ना कि नहीं, वी हैड टू रीअलाइन द रोड बिकॉज ऑफ दिस यूटिलिटी. लगता है अरे ये पाइपलाइन हटा दो ना, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. यू डोंट गेट दैट स्केल. ये पाइपलाइन छोटा नहीं है, उसके वो दैट इज़ द गवर्निंग फैक्टर, नॉट जस्ट दैट पाइपलाइन. 1 मीटर का पाइपलाइन रहेगा तो, बट वो पाइपलाइन 1 मीटर का है इसलिए हटा सकते ऐसा नहीं है. It is connected to something huge in the back end. So that all plays into that utility. So Mumbai mein they have mapped many utilities. I will not say most of it. They have everything on GIS platform. So building permission में if you have to construct any building permission रहता है तो this goes to that GIS department. तो ये data है BMC के पास, but they will not share it for their own reasons. They can be valid reasons, there can be some other reasons also, but they will not share it. So ये जो है ना, that sharing part of it, that is a big hindrance to the utility consolidated mapping. वो नहीं करेगा कोई. अगेन ये कॉस्ट एफर्ट्स ले आता है. करेक्ट. आई थिंक गिफ्ट सिटी इज वन ऑफ दोज प्लान्ड सिटीज अभी जो इस चीज को बहुत अच्छे से एड्रेस कर ले, बिकॉज वो तो कर ही रहे कि लाइक टनल Right. कर रहे हैं, बट इवन टू द लेवल ऑफ HVAC तक उन्होंने उसी में कर रखा है कि नो दिस इज द टनल, इधर से ले जाना है, Yes. एंड अकॉर्डिंगली जो बिल्डिंग्स बनती And everything is उनको mapped. follow Yeah. करना है. Yes, so in future they will have probably Correct. various problems. Because very easy ना to do any kind of planning, change करना है, retrofit करना है, rehabilitate करना है, अरे ठीक है सब, all plans are ready with us. होपफुली मुंबई से बेटर मैप्स नवी मुंबई के थे आप लोगों ने. Yes. एंड होपफुली मुंबई 3.0 विल हैव इवन बेटर डिटेल्ड. Possibly. Yes. Possibly. फ्यूचर में जब वो शहर ग्रो Correct. होने लगे Correct. तब दिक्कतें ना आए. Correct. Correct. So let's move on to the last question. Yes. So we discussed the family legacy, the company's legacy. On a personal note, what was your favorite project? Like this is a very general question. फिर वो challenge के हिसाब से भी हो सकता है, खुशी के हिसाब से भी हो सकता है. Right. Just a very simple question. So I have to, I can't say one project, but few projects do come to my mind which have been critical to our growth and where we felt we contributed to the industry and to the nation. One of course is Konkan Railway project. I was not part of it, but my grandfather and father. I have been to the site when I was in school. I was very little back then, but I could see the kind of effort our company has taken to map out the for the survey and the geotech investigation, and the project was very challenging, and that particular link has helped millions of people to get connected to the cities. So that is one project where we feel very proud to have contributed to the nation. Then a few recent projects, जैसे मैंने बताया कि घाना में अफ्रीका में किया था. It's a very interesting project which happened in my tenure. Projects in Lakshadweep, and of course Sidco. We can't forget about the contribution that our company has done for Sidco right from 70s. So even now Sidco might not have certain information or data, but our companies, because we have done for so many decades, they do lean on to our company कि अरे please help us with this, we want some information, या फिर ये सर्वे करना है, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो please help out with us. So these are the few projects and clients where we feel privileged to be associated with and to give our contribution. आई थिंक आपके एज अ कंपनी अपने ही इतने आर्काइव्स होंगे कि दैट आर्काइव सेलिंग कैन बी अ सेपरेट बिजनेस. Yeah, but we generally don't do all that, because कैसा है ना, ultimately this data is the client has paid us to collect the data, and the data technically belongs with them. Yeah. But there have been instances where especially with Sidco where they don't have the data and they just told us कि अरे शिदोरे आपने वो किया था वो काम 15 साल पहले, तो उसका कुछ है क्या? Then we have to dig into our archive and see if we can also find it, and then we do provide that data. जैसे आप ब्रिटिश मैप्स वगैरह की बात Exactly. कर रहे थे, मे बी इट्स ऑलरेडी अ 40 year थिंग, बट
these करेक्ट things will survive. अभी तो करेक्ट डिजिटाइजेशन भी होता होगा हर करेक्ट चीज का. करेक्ट करेक्ट So in the coming like we all not me मतलब रहेंगे नहीं शायद, बट हो सकता है 100-150 साल बाद किसी को आपके काम का कोई मैप मिले जो उनको उस समय पे काम में आएगा. पॉसिबली 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 Thank you so much sir for your time. थैंक यू I think this is one of the most technical talks we had. बहुत सारे टर्म्स जो है शायद ऑडियंस को अगर नहीं समझे तो वो तो हम एडिट्स में बता देंगे लोगों को, बट ऐसी चीजें आपने बताई जो लोगों के सामने कभी आती नहीं है. थैंक यू थैंक सो यू मच अगेन फॉर योर टाइम सर. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी थैंक यू